Namaste viewers, welcome to Jaipur Dialogue USA and Jaipur Dialogue and welcome to the show. और आपका स्वागत है. Please like, subscribe, support our channel, press the bell icon as the saying goes and be on the alert. We appreciate your support and we love your feedback. So please keep giving the feedback because that's what makes us better. I'm a creature of feedback and follow-up. Today's show I'm going to talk about I will be mixing between Hindi and English. बहुत सारे दर्शकों ने ये रिक्वेस्ट किया है कि इस शो को अंग्रेजी में ही रखा जाए क्योंकि हिंदी के बहुत सारे शो हैं और कुछ लोग कहते हैं कि आपकी हिंदी अच्छी है, आप बोलते रहिए. तो since I know both the languages, I'll continue to dialogue with you in both today. Given the importance of the subject matter, it is important for us to bear in mind. आप कहेंगे कि आज कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है? आज मैं चर्चा करूंगा गांधी, नेहरू एंड गांधीगिरी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. अभी हाल ही में हमने स्वाधीनता दिवस मनाई थी और एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट नेहरूज स्पीच, द मिडनाइट स्पीच, इंडियाज ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी. बहुत दिनों से ये सवाल उठता था कि ये ट्रिस्ट का मतलब क्या होता है. ये मान लीजिए कि देखिए कितने साल लगते हैं किसी चीज को समझने में. हम लोग सीधा यही मानते थे कि ये ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड, कैम्ब्रिज एजुकेटेड, जहां के भी तो इंग्लिश एजुकेटेड नेहरू अगर अंग्रेजी में कुछ बोल गए हैं तो उसका बहुत ही सार्थक अर्थ होगा, राइट? बट आई चेक्ड अप द मीनिंग. इट्स हियर इन गूगल. इट्स हियर, यू कांट सी इट बट आई एम रीडिंग इट टू यू फ्रॉम हियर. ट्रिस्ट का मतलब है, एंड आई एम रीडिंग द डिक्शनरी मीनिंग, नाउन के तरफ से उसका मतलब है अ प्राइवेट रोमांटिक rendezvous बिटवीन लवर्स. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एलिमेंट. एंड देन वर्ब का मतलब है कीप अ प्राइवेट रोमांटिक rendezvous. rendezvous मीन्स जमघट जो होती है, क्या उसका क्रूड ट्रांसलेशन इज rendezvous, कि वहां मिलेंगे, इस तरह का जो rendezvous होता है. वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई रिपीट दैट. A private romantic rendezvous between lovers. Now, Nehru may consider India to be his love. Perfectly granted. But it is a private romantic rendezvous. उसका नतीजा देखिए. भारत उनकी प्रॉपर्टी बन गई. मैंने इस बात की चर्चा एक बहुत ही अच्छे प्रोफेसर से बात की. मैंने कहा कि शायद नेहरू जो हैं वो एडवीना की याद में कह गए थे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी. क्योंकि एडवीना के साथ रोमांस खत्म हो गया भैया, प्राइवेट रोमांस था वो खत्म हो गया. प्रोफेसर साहब ने हंस के मुझे ईमेल कहा कि यू आर प्रोबेबली राइट बिकॉज ही हैड रिटन एन एसे ऑन इंडियाज ट्रिस्ट विद डेस्टिनी. दैट्स व्हाई आई आस्क्ड हिम, बट दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रिस्ट. व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन? Was it he was going to miss his tryst with Edwina? Coming back to the serious element of this as well, because this is very serious, because गांधी ने नेहरू को भारत पे थोपा. ये इतिहास आप जानते हैं. तो मैं जो बात करूंगा शायद उसमें कोई ऐतिहासिक क्या कहते हैं डिस्कवरी नहीं है, लेकिन इंटरप्रिटेशन की बात है. ये मेरा इंटरप्रिटेशन है. जैसे मैंने आपको ट्रिस्ट के बारे में कहा, द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी अ प्राइवेट मैटर. ही कंसिडर्ड इंडिया as a private matter of Congress party that has been received the transfer of power. और नेहरू इलेक्शन हारने के बाद, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इलेक्शन हारने के बाद, by a whopping margin of 13-1 or whatever, 13, 15, whatever it is, number is, Gandhi did a drama. Gandhi's first act of Gandhigiri that is visible to us, जो उन्होंने अनशन कर दी कि हमको इसी को चाहिए, सरदार पटेल नहीं चाहिए. See the impact of that. उसका इम्पैक्ट यह है कि आज तक कांग्रेस पार्टी परिवारवाद में फंसा हुआ है. फैमिली लिमिटेड पार्टनरशिप बन के रह गई. किसी के बाप की मजाल नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी में जो कोई मुंह खोले या कुछ बोले. जो लोगों ने बोला उनकी हालत क्या हुई आप जानते भी हैं. उसमें मेरे भाई भी लगे हुए हैं, उसमें इंक्लूडेड हैं. जब उन्होंने सलाह दी तो उनको हटा दिया बाहर से, पार्टी से. कह के दुख होता है. ये परिवारवाद का जो
जो बीज रोपा गया वो वहीं रोपा गया. The family limited partnership is still trying to rule the country by hook or by crook. Now, this is important. उस गांधीगिरी का असर क्या हुआ भारत पे? नेहरू आए, उनको सिक्योरिटी काउंसिल में सीट दी गई भारत को. He said no. I mean, you think about it. You go back in history and you ask this question to yourself. If the United Nations, a new organization, was inviting you to become a Security Council member, would you say no? But Nehru did. And what did he do? Tell China to get it. China deserves us more. पहले आप. नतीजा क्या हुआ? आज तक हम उस चीज को भुगत रहे हैं. China is the block which is not letting us get onto United Nations Security Council, Nuclear Suppliers Group, and you know what China is doing to it with India. Fighting and disturbing. This was the same man, Nehru, जिन्होंने अक्साई चीन दे दी. Not a blade of grass grows there. अरे भैया मेरे ऊपर भी कुछ नहीं है अभी, लेकिन एक जमाने में बहुत था. तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा सर बेकार है. Correct? This man made that statement. और इनका, he was actually, Nehru became a dictator in a democratic setup. किसी की मजाल नहीं थी कि कोई इसको खिलाफ बोले. किसी की मजाल नहीं थी कि इंदिरा गांधी के खिलाफ बोले. दूसरी बात, तो उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को छोड़ दिया. कोई बेवकूफ ही ऐसा कर सकता है या उसके मन में कुछ बात थी. इस बात को आगे बढ़ाइए और इसको देखिए कि उनकी फैमिली ने, जिसकी पार्टी उनकी अपनी पार्टी है, फैमिली लिमिटेड पार्टनरशिप, सीसीपी के साथ अग्रीमेंट है. और आप सब जानते हैं कि सीसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, किस तरह से अमेरिका में घुसा हुआ है, किस तरह से उन्होंने इंडिया में वो न्यूज आइटम को कैसे बताया कि कैसे पैसे देकर के बैड नैरेटिव कर रहे हैं. उस चाइना को नेहरू ने सिक्योरिटी काउंसिल की सीट दी. या तो उनका मन भारत के प्रति नहीं था या वो बिल्कुल बेवकूफ थे. तीसरी बात, कश्मीर को देखिए. वो पंडित बने हुए थे. अब पंडित किसने बनाया उनको मुझे तो पता नहीं, कैसे बने वो भी मुझे पता नहीं, लेकिन वो पंडित का टाइटल लेके बैठ गए कश्मीरी पंडित के नाम पे. ऑलराइट, ओके. लेकिन मजे की बात यह है कि और कोई भी कश्मीर में, मेरे इतने सारे दोस्त हैं कश्मीरी, कोई अपने आप को पंडित नहीं कहता. राइट, सबके नाम है अपने अपने. लेकिन जिन्होंने किया है उसको इस बात को सोचिए. पंडित नेहरू ने कश्मीर का मामला यूनाइटेड नेशंस को फिर दे दिया, जहां पे वही लोग मेंबर थे जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड के लीडर्स बने, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूशन बनाया वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए. आप आज की तारीख में कहते हैं ना कि लुकिंग बैक लुकिंग फॉरवर्ड. अगर आप लुकिंग बैक लुकिंग फॉरवर्ड का अंदाज लगाएंगे तो देखेंगे कि वो क्या था, यूनाइटेड नेशंस क्या था. वो इंपीरियल पावर्स जो इंपीरियल पावर्स थे, उन्होंने एक नया गठ बना लिया, मेंबरशिप बना दी, और आपने एक उस ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया समस्या को सुलझाने के लिए, जिसका की ब्रिटिश, फ्रेंच, अमेरिका, रशिया, चाइना वर द मेंबर्स. Did you expect a good treatment from there? जिन्होंने आपके देश को बांटा था. This is the second point which I want to emphasize on. Referring the matter to United Nations, अपनी बात किसी और को बोल रहे हैं संभालने के लिए. Total lack of responsibility. अपने घर की बात अगर आप किसी बाहर वाले को कहेंगे तो उसमें chances are that your family welfare is not important for him. थर्ड, कश्मीर के मामले को लेते हुए देखिए, सारा कुछ उन्होंने मिस्टर अब्दुल्ला के हाथ सौंप दिया. फिर झगड़ा हुआ. आपको कश्मीर की कहानी पूरी पता है, पूरा मालूम है. You know the story. Now it's important part. How come the pundits who trusted you as a pundit, since you were a pundit, you betrayed them, you sold them out? Coming to the next topic. This is very again important. Nehru gave the slogan, he adopted the socialist 5-year planning model.
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को उन्होंने कहा था कि कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी, they will be the commanding heights of economy the private sector is incapable of. Partly true, because at that time the private sector didn't have the money to make the kind of investments that India needed. Although Birla supported Gandhi big time, I'm told that Dalmias were ignored, but Birlas were supported. But private sector was relegated as a second class. Public sector became the commanding heights of economy. I will spend a bit of a time on this because it's very important. Public sector undertaking that was supposed to become the commanding heights of economy with major investments made by the government, deficit financing, came from there. But what was the actual output of that by Nehru? He handed over the administration, CEO, करके chairman बना दिया, and they became hub of inefficiency and ineffectiveness. Capital works on efficiency and effectiveness. Remember that. You all know it. I don't have to tell you that. Capital efficiency and capital effectiveness suffered at a big way. Result was Indira Gandhi nationalized banks for the socialist purposes. Efficiency and effectiveness suffered. I'm a banker. I lived in India for many years, and I know it. And nobody needs to tell me that. So what happened was, in the process, you saw a complete society, Sarkar Mai Baap ban gayi, and entire society became inefficient and ineffective. The commanding heights of economy, you know what happened to Air India, had to be rescued. Centaur Hotel, remember that? Hotel Corporation of India, band ho gayi. Itne sare Navratan band hone pade. I remember one incident when a major public sector undertaking director of finance, my college, my schoolmate, he told me in absolute confidence and shivering and ashamed. He said, 4 saal se hame koi order nahi mila hai. But by the time we take decisions, our deal is done. I asked him, how do you suppress that news? He says, Sarkar ki baat hai. Kisi ki mazal nahi ki uske bare mein kuch baat kare. That's what is happening. The socialist structure, a failed structure, is something that we lived with in the entire Congress era. The concept of opportunity lost for India is massive. Massive. You can't even calculate that. If India had been a capitalist system right from the beginning, with the respect to private sector, that they could also trust. Look at America. 90% of the industry and business is in private sector. Government trusts defense industry. That's where the work happens. Look at America. It's all private sector. That's where the lack of thinking of Nehru was important. One of the biggest impacts of the Gandhigiri of Gandhi and Nehru that hurt India the most was distortion of Hindu history. You all know that 4 or 5 education ministers since 1947 were not Hindus. The entire Hindu history, their restrictions, continuation of controlling Hindu temples, not allowing Hindus to teach their subjects in the Gurukul system, where the churches and madrasas could easily have their own schools to imbibe the education. Hindu institutions were not allowed. So much so that we now know that in Manipur, Christians were allowed to convert and enter. Hindu priests were not. Hindu sadhus were not. Ladies and gentlemen, when you watch this, when you look at this, I believe in the concept of looking back and looking forward. What did we learn from history? What did the history do to us? And that's a very important phrase I want to share with you. History is littered with corpses of men and women who forgot the lessons of history. ये इतिहास हमें अपने आप बनाना है. The reason why I say that is look at the impact. Even Gandhi नाम चुरा लिया गया. तो उनका व्यक्तित्व क्या था, उनका intention क्या था, was so damn vicious that Indira became Gandhi. नेम लेंडिंग हुआ, नेम को हड़पाया गया, और वो सब यहाँ तक कि अब देख रहे हैं कि
प्रियंका गांधी का बेटा जो रॉबर्ट वाड्रा का बेटा है, उसको भी रेहान गांधी बोल रहे हैं. Think about the impact of that. And Indira Gandhi brought emergency to protect her own seat, her own power. Remember that. Because the Allahabad High Court overturned her election for maybe a technical reason. Courts take matter in technical reasons. She imposed emergency because she immediately saw a threat to her future existence, family. This is a topic which needs far greater insight and going into. You are talking about it. You know about it. हमें उनको जो है आरती नहीं उतारनी है, इतिहास को जानना है. आज हम इस इतिहास को जानने लगे हैं. It's very, very important. और याद रखिएगा, इस परिवार की जो कहानी जब जैसे जैसे खुलती है, आपको इस बात को जानना पड़ेगा, उन्होंने हमारे आपको बहुत नुकसान पहुंचाया है. उस नुकसान को रोकना है, वो 10 साल में नहीं होगा. समय लगते हैं, कानून बनते हैं. You know the rules, laws of 25 to 30, section 25 to 30, articles 25 to 30. हटाना बड़ा मुश्किल होता है constitutional provisions में. Ladies and gentlemen, thank you for listening. I want to say one thing. Some of you have asked, where do we go from here? What is the solution? The solution is with you. What are you thinking about it when you hear what I said? And there are many more. I can list you dozens of items. Not that they didn't do any good. I'm not contesting that. They may have done. But Nehru, for me, typifies that he was a utopian man. He ख्याली पुलाव बनाते थे, right? हर non-aligned movement बना दिया, हिंदुस्तान को निकम्मा बना दिया. Think about it. It's very important. And you have to think about what is it that you can do. I will invoke JFK's words here. Ask not what the country can do for you. Ask what you can do for the country. It begins with individuals, collectively, and then the institutional part. Satyamev Jayate. Thank you.